हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने जो मेरी इसके पहले की वीडियो थी वहाँ पे हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को देखा था। और हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइजेस की थी जो बेस्ड थी एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड। और उस पे एक फॉर्मूला था कि एचसीएफ जो दो नंबर्स होते हैं और एलसीएम उन दो नंबर का, उन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है उस नंबर के प्रोडक्ट के, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। ठीक है, ये हमने कवर किया था इसके पहले ना। जब हम लोगों ने इस सीरीज की इंट्रोडक्शन स्टार्ट की थी तो उसमें हम लोगों ने एप्लीकेशन को डिस्कस किया था कि जो एप्लीकेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वो क्या है। एक तो है कि टू प्रूव द irrationality of the numbers, and second is to prove rational number is terminating and non-terminating। ओके, मतलब हमको जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम ये दिखाएंगे कि कैसे इरेशनल नंबर्स हैं वो प्रूफ, लाइक √2, √5, √3, ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। तो ये कैसे इरेशनल नंबर्स हैं हम इस थ्योरम का यूज़ करेंगे और ये प्रूफ करेंगे। और दूसरा है कि कोई रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग कब होगा और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, क्या उसके डिनोमिनेटर में होता है जिससे कि वो टर्मिनेटिंग होगा, और क्या नहीं होगा तो जिससे वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें हम एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स क्या है। तो जो रेशनल नंबर्स हैं हम क्या जानते हैं कि जो कि हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, जहाँ पे क्यू हमारा क्या हो, जीरो के बराबर ना हो। तो ये जो है कि रेशनल नंबर्स का एक डिफिनीशन है कि भाई पी और क्यू को हम मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें और क्यू मेरा जीरो ना हो, तब वो मतलब क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और इरेशनल नंबर अगर ये चीज़ नहीं हो रही है, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, जहाँ क्यू जीरो ना हो, तो वो क्या हो जाता है मेरा इरेशनल नंबर्स, लाइक √2, √3, √5, पाई, ये सब क्या है, मेरे इरेशनल नंबर्स हैं। ओके, सो नाउ to prove irrationality of a number, like if we say to prove √2 is irrational. Okay, so before starting that ki √2 is irrational, we have to go through one theorem 1.3 in your NCERT book, theorem 1.3. What it says is, let p is a prime number. Okay, if p divides p square, then p also divided it. ओके, सो अगर p कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर्स मतलब लाइक 2, 3, 5, 7, अगर p कोई प्राइम नंबर है और वो a स्क्वायर मतलब कोई ऐसा नंबर जैसे 4 का स्क्वायर, ओके, लाइक
5 का स्क्वायर और you can consider 6 का स्क्वायर. So अगर if p divides 4, 6 any number, then p also divides a. Like suppose if p divides a square means suppose 2. 2 is a prime number. Okay. Now if 2 divides 4 square, that is 16. 4 square, that is 16. And 2 divides 16, 8. Simple. 2, 8. Okay. So it also says that p divides a, that is this number 4. Yes. Then 2 divides 4. According to my example, I take p is equal to 2, a is equal to 4, and a square. So p divides a square, that is 4 ka square. So p also divides this. This is what basically this theorem is. Now let us prove it using the fundamental theorem of arithmetic. Okay. So proof. Let us consider the prime factorization of a. क्या होगा? a का प्राइम फैक्टर क्या होगा? p1, p2, p3. We suppose that कि जो a नंबर है like 16 in my example, तो उसके प्राइम फैक्टर होंगे ना कुछ. तो बस वही हम कर रहे हैं कि a के कुछ प्राइम फैक्टर्स हैं. Okay. And this is not necessarily be the same, they are be different. Okay. So now consider prime factorization of a. Consider this. So now if p divide sorry, now a square will be p1 into p2 into p3, p1 into p2 into p3, or it can be written as p1 square, p2 square, like that. Okay. So using fundamental theorem of arithmetic, we can say a square has a prime factor this. Okay. So it can be said that the p is prime factor from one of values p1, p2, p3. P is a prime factor from one of values, like if 16 divided then 2, 2, 2, then I consider that p is equal to 2. So 2 is a prime factor. Simply, if a square's prime factor are this, if a square's prime factor are this, it possibly that this p divides a square. That possible that one of the values belong to this. So it says that p divides a simply. So means that कि एक p की वैल्यू इन प्राइम फैक्टर्स में से होगी, जो a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स हैं, इसमें से एक p की वैल्यू होगी. So it proves that कि a p1 p2 p3 have one factor as a p. Okay. So p divided a. Okay. अब now
to prove root 2 is irrational. Okay. To prove root 2 irrational, first we consider that root 2 is a rational number. Okay. And we prove by contradiction that this is not true. Our assumption is wrong. Okay. So let us assume ये मान ले रहे हैं कि रूट टू एक रेशनल नंबर है जो कि आर बाई एस के फॉर्म में लिख रहे हैं एस इज नॉट इक्वल टू जीरो वेयर आर एंड एस है कॉमन फैक्टर common factors other than 1. Okay, ये हम माने. Okay, now let us assume root 2 a by b and a and b are coprime. A and b are coprime. That is, they don't have the factor other than 1. Don't have factors other than 1. Okay, so what we can write, b root 2 a squaring both sides, what we will get, b square to a square. Okay, so from above, from this equation, what we get, 2 divides a square. So using the above equation, 2 divides a also. 2 is a prime number, and if it divides a square, then 2 divides a. Using the above theorem, so now replace the value of, so a can be represented in the form of a is equal to 2c. Similar thing, like if 2 divides a, so means like if we say divided by 4 divided by 2, then it have like written like this, a 4 is equal to 2 into 2. 2 divides 4. Similarly, 2 divides a. A can be any number, and this to consider to be c. So it can be written like this. Okay. Now replace the value. Replace this a in equation 2b square a square. So what it can be, 2b square is equal to 2c का whole square. 2b square is equal to 4c square. B square is equal to 2c square. That is from this equation, what we can say, 2 divides b square, and so 2 divides b. Again using the above theorem that if prime numbers divide a square, then it divides a also. So 2 divides b also. So what we can say, 2 divides a and 2 divides b. So we can say a and b have common factor other than 1, that is 2. So the assumption
So the assumption that root 2 is rational is wrong. Therefore, root 2 is irrational number. ओके, क्योंकि हम लोगों ने मान के चला था ए और बी को प्राइम नंबर है, बट ए और बी के क्या है, कॉमन फैक्टर्स आ गए दो। देयरफॉर हमारा एजम्पशन गलत है। हमारा एजम्पशन गलत है कि वो रेशनल नंबर्स हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे उनको, रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। ओके, नाउ लेट अस प्रूव root 3 is irrational. Okay, so let us consider first, let's consider root 3 is rational. So we can write root 3 is equal to r by s, where s is not equal to 0, and r and s have common factor other than 1. Okay, we can write root 3 a by b, dividing where a and b are co-prime. Means this a and b are actually this common factors of r and s other than 1. Okay, so a and b are co-prime. मतलब we can divide a by b such that we get this root 3. Okay, now we can write root 3 a by b as b root 3 equal to a, or we can write it as what, 3b square a square. So from above theorem, what, 3 divides a square, 3 divides a square, that is 3 divides a also, 3 divides a also using the theorem. So it can be written as a is equal to 3c. Okay, now use this in equation 3b square a square. So what will you get, 3b square 3c का square, 3b square 9c square, or b square is equal to 3c square. So what we can say from here, that 3 divides b square, so 3 divides b. So here what, 3 divides a, 3 divides b, that is 3 is common factor of a and b. So our assumption is wrong, and is wrong that a, b are co-prime. So root 3 is not a rational number. So root 3 is irrational number.
So this is basically the proof what we have to follow. Okay. Now there are some properties. There are some properties which are related to the rational and irrational numbers, like sum of rational and irrational number is irrational number. Okay. And difference of rational and irrational and irrational is irrational number. Even product and quotient, product and quotient of rational and irrational number is irrational number. Okay. So basically what first property says, that sum 5 plus root 3 or 5 minus root 3 means 5 plus root 3, 5 minus root 3, that is sum and difference. Here 5 is rational and root 3 is irrational, as I had proved earlier. Similarly here rational and this, but sum of this rational and irrational and difference of this rational irrational is irrational number. Okay, now we are going to prove this. What? 5 minus root 3 is irrational number. Okay, so consider 5 minus root 3 can be irrational number. First consider it is a rational number. Okay, then we can write it in the form of a by b. So let us rearrange this equation. 5 minus a by b equal to, rearrange the equation. So it can be written like this. Okay. Now our root 3 is equal to 5b minus a by b. Now 5 minus a by b is a rational number, as a and b are integer. But root 3 is irrational number. Root 3 is irrational number, as already I had proved. Therefore, if root 3 is a irrational number, therefore this 5 minus a by b is also a irrational number. As I already mentioned, root 3 is a irrational number, 5 minus b also irrational. But why this contradicts the fact? Na? I had proved that root 3 is a irrational number. Therefore, this why it is coming that it is a rational number, due to the fact that, and we assume that this 5 3 AB is 5 minus root 3 AB is also irrational. So we already proved that root 3 is a rational number.
Therefore, this could be the rational number. But why this is coming as irrational? Because we assume the wrong thing, that 5 minus root 3 is a rational number. Therefore, 5 minus root 3 is a irrational number. Okay, so what we have done, हमने एक 5 माइनस रूट 3 को माना कि भाई वो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। फिर मैंने रीअरेंज किया। हाँ, रीअरेंज करने के बाद हमें क्या मिला, हम ये मिला, जो कि ए बी अगर एक इंटीजर है तो ये नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। सॉरी, दिस 5 माइनस ए बाई बी इज अ रेशनल नंबर। बट क्या है कि ये इक्वल टू किसके है, रूट थ्री के। तो रूट थ्री क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा ना, क्योंकि भाई रूट थ्री क्या है, हमने प्रूव करके दिखाया है कि वो एक इरेशनल नंबर है। ये इस फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया कि 5 माइनस ए बी रेशनल नंबर नहीं होगा, वो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। लेकिन वो रेशनल नंबर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ एक गलत एजम्पशन माना है कि 5 माइनस रूट थ्री मेरा क्या है, रेशनल नंबर। इसलिए 5 माइनस रूट थ्री क्या होगा, मेरा रेशनल नंबर होगा फिर। ओके, थैंक यू। एंड दिस इज ऑल अबाउट द प्रूफ। जो भी एक्सरसाइजेज आपके एनसीईआरटी में है, सब सेम है, इसी तरह प्रूफ उनका करना है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइजेज हियर। एंड try. If you don't know how to solve, please comment in the section. I will make the videos regarding that question and provide you with the solution. Okay, thank you. Please like, comment and subscribe.